Hello everyone, welcome back to Nucleotides Biology Discuss. Today we have to continue our paper Molecular Biology and this is your lecture number 12. Molecular Biology रा 12 नंबर लेक्चर के समस्त को वेलकम एंड आज ही हमें डिस्कशन करमा कहार बाबत रे दैट इज अबाउट द rRNA. लास्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करतला कहार बाबत रे mRNA बाबत रे डिस्कशन करतला एंड mRNA रो काना काना डिफरेंट पार्ट्स दिस दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. mRNA रो गोटे छुटिया पर्सन हमर रहि जेतिला तार बाबत रे फर्स्ट आज हमें डिस्कशन कर देमा तापरे विल स्टार्ट फ्रॉम द rRNA सेक्शन. ओके सो लेट्स स्टार्ट द सेशन फ्रॉम दिस mRNA रो गोटे छुटिया पर्सन जेंटा के हमें डिस्कशन करबार थिला. mRNA हमें जते बेले देखुछु mRNA के दुईटा कैटेगरी रे हमें डिवाइड करि पारमा. जो वन इज योर मोनोसिस्टोनिक एंड अनदर वन दैट इज द पॉलीसिस्टोनिक. ओके mRNA के दुईटा कैटेगरी रे डिवाइड करि पारमा. वन इज योर मोनोसिस्टोनिक RNA and another one that is polycistronic mRNA. Polycistronic. ओके देखो सब बोले मन रखी तो सिस्ट्रोन टर्म टा में कहार लगी यूज करि परसो जीन रो लगी जीन टा में वर्ड यूज करि परमा सिस्ट्रोन. ओके सिस्ट्रोन माने होचे जीन. ओके जीन के हम अदरवाइज कहि परमा सिस्ट्रोन बोली करि कहि परमा. mRNA that may be monocystronic or mRNA that may be polycystronic. पहला बुझू एंड किन टाइप रो mRNA किन टाइप रो ऑर्गेनिज्म रे देखबार के मिलसे दैट वी हैव टू डिस्कस हियर. मोनोसिस्टोनिक माने काना देखो जदि हमर mRNA हला सपोज दिस वन दैट इज द mRNA. ओके एंड अनदर थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर जो वन जीन गुटे जीन काना करसी दैट विल मेक वन प्रोटीन. ओके जनरली वन जीन दैट विल मेक ए सिंगल प्रोटीन. जनरली गुटे जीन गुटे प्रोटीन तैयारी करसी. ओके सेंता मोनोसिस्टोनिक मोनो माने कण वन एंड सिस्टोन माने कण जीन. जदि गुटे mRNA that is responsible for the synthesis of only one kind of protein then that is called as monocystronic mRNA. सिस्टोन रो काम कण सिस्टोन होचे कण दैट इज द जीन. जीन टा कहार पार्ट है डीएनए रो पार्ट है एंड डीएनए नो कण तयारी हला mRNA तयारी हला. And if this mRNA is responsible for the formation of one type of protein, this one that is your protein. Okay, जदि गुटे mRNA रू गुटे टाइप रो प्रोटीन तयारी हला because one gene will make one protein. गुटे जीन गुटे प्रोटीन तयारी करसी है ना. सेंता mRNA जदि गुटे प्रोटीन तयारी करूची बेले से टाइप रो mRNA के काम करी मोनोसिस्टोनिक mRNA. बिकॉज डीएनए रो हमर जते बेले भी mRNA तयारी हला कहार नो तयारी हला डीएनए नो तयारी हला. दिस वन दैट इज योर डीएनए हला. ओके दिस वन डीएनए रो गुटे पार्ट के मैं काना कहूछु जीन बोली करी कहूछु. दिस वन जीन यू गुटे जीन रो गुटे mRNA तयारी हला एंड दिस mRNA इज मेकिंग वन प्रोटीन. दैट मींस गुटे जीन रो गुटे प्रोटीन तयारी हला. ओके दिस वन दैट इज द डीएनए एंड डीएनए रो गुटे गुटे पार्ट के मैं काना कहूछु जीन बोली करी कहूछु. जीन माने काना दैट इज द डीएनए. तो डीएनए रो छुटिया पर्सन दैट इज मेकिंग ए स्पेसिफिक प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट जीन बोली करी कहूछु. तो इनो हमर डीएनए नो आरएनए तयारी हला आरएनए रो काना तयारी हला प्रोटीन तयारी हला. बट गुटे mRNA रो केतरा प्रोटीन तयारी हला गुटे प्रोटीन तयारी हला. वेल दिस टाइप ऑफ mRNA दैट इज नोन एज मोनोसिस्टोनिक mRNA. ओके तो कहा के हम मोनोसिस्टोनिक mRNA if the mRNA is making a single protein then it is called as monocystronic mRNA. तो तके को हम मोनोसिस्टोनिक mRNA. ओके सो लेट्स सी हियर. तो मोनोसिस्टोनिक mRNA काना कहला जे सपोज दिस वन दैट इज द mRNA हला एंड mRNA रो गुटे प्रोटीन तयारी हबा
एंड जेतेबेले प्रोटीन तयारी हेसी से टाइम रे हमें जानि थिमा जे प्रोटीन सिंथेसिस गुटे स्पेसिफिक पॉइंट रो स्टार्ट हेसी जाके स्टार्ट कोडन बोली कि क्वेश्चन जेतेले एमआरएनए रो स्ट्रक्चर डिस्कशन करथला जे हमर इन हला दिस वन दैट इज द स्टार्ट कोडन दैट इज योर एयूजी ओके एंड दिस वन दैट इज योर स्टॉप कोडन जिन जगह हमर प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हेसे ताकि क्वेश्चन में स्टॉप कोडन एंड स्टॉप कोडन हला सपोज यूएजी ओके हमर पाके तीनटा टाइप रो स्टॉप कोडन अछि एयूजी यूएजी UAA and UGA and AUG जा होचे हमर कना दैट इज स्टार्ट कोडन and UAG टा हला हमर का कोडन दैट इज स्टॉप कोडन जेन जगह हम प्रोटीन टा सिंथेसिस स्टॉप होछ तो इनो गुटे स्टार्ट कोडन गुटे स्टॉप कोडन अछि एंड एतकी भितरे हमर कना सिंथेसाइज होचे प्रोटीन सिंथेसाइज होचे and this one that is our protein तो जदि हमर मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए ए बेले एमआरएनए पाखे केतेटा स्टार्ट कोडन थिबा गुटे स्टार्ट कोडन आ गुटे स्टॉप कोडन थिबा ओके तो एमआरएनए पाखे काना रहला जे मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए have one start codon, one start codon and one stop codon. Gote start codon and gote stop codon. Okay, and this kind of condition or this type of RNA, monocystonic RNA, that is the characteristics features of what? That is the characteristics of the eukaryotic cell. देखो, this is the characteristics where these are found. किन जगह रे देख पार के मिलसे? For example, these are found. This is found in eukaryotic cell. Eukaryotic cells. केनो देख पार के मिलवा? Eukaryotic cell रो characteristic features. Question is see, the monocystonic RNA is the characteristic features of the dash type of cell. That is the characteristic features of your eukaryotic cell. That means in the eukaryotic cell, the mRNA which are formed that are having only one start codon and one stop codon, that means that mRNA is responsible for the formation of how many protein? That will make a single protein. That type of mRNA, that is known as what? Monocystonic mRNA. This is the characters of the eukaryotic cell. Okay? तापरे जो हमें next polycystonic RNA. Poly माने काना? So many. And cystonic what asla keno gene ru asla. Okay, that means so many genes they are making so many proteins. So many genes they will make the so many protein because one gene make one protein. That means many gene will make many proteins. है ना? तो इनो काना कहूचे देखो जदि mRNA suppose this one that is the mRNA हला and mRNA that is making more than one protein. Single mRNA if that is making more than one protein, that type of mRNA is called as polycystonic mRNA. देखो, suppose this one mRNA हला, mRNA रे this one that is our start codon गुटे अच्छे. इटा हला start codon. Okay, and this one suppose this is your stop codon. Stop codon. Then after some distance, again another start codon is there. Start codon. And then another stop codon is there, suppose. Okay. Again, there is presence of one start codon. And here again there is presence of stop codon. ओके तो देखो इनो जते बेला प्रोटीन तयारी हबा एतकी रो एतकी गुटे प्रोटीन तयारी हला दिस वन दैट इज मेकिंग वन प्रोटीन ओके सपोज दिस वन दैट इज द प्रोटीन ए ना दलना इतके प्रोटीन ए एंड दिस इज मेकिंग अनदर वन प्रोटीन ओके इतके दला प्रोटीन बी
This is making a protein. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಲಾಮೆ protein B. Protein B. And इतरनु एतकी भितरे गुटे प्रोटीन तैयारी हला. Suppose इतके ना दलामे protein C. Protein C. Okay, how these proteins are synthesized, that we have to discuss when we will discuss about the translation. Protein केंदा करी तैयारी है, से मैं translation पढ़ला वाले discussion करना, just overall भी जानी था. So this part is making one protein, this part is making one protein, this part is making one protein, right? तो गुटे mRNA रू more than one protein formation हला, more than one protein माने काना? One gene make one protein, that means more proteins माने there is presence of more genes. Okay, mRNA जन DNA नो तैयारी हला, से DNA पाके more than one gene थिला. Suppose, let me take a minute dama. इस जगह DNA बना मा. Suppose this one, that is our DNA. Okay, any DNA रे more than one gene अच्छे. Suppose this is gene 1 हला, this one that is gene 2 हला, and this one that is your gene 3. ये gene 1 नो this part, ये gene 2 नो this part, gene 3 नो this part. mRNA तैयारी हला, DNA नो mRNA तैयारी हला. गुट्टे gene, okay, गुट्टे DNA रे more than one gene अच्छे. गुट्टे DNA देखला जो there is presence of more than one gene and that are making one mRNA. mRNA तैयारी करेले तो mRNA रे भी काना अच्छे more than one genes रहला and that genes are making proteins. Okay, जद्दी गुट्टे mRNA that is responsible for the formation of more than one protein, then that is known as polycystonic mRNA. Okay, तो काना को होचे if one mRNA, if from one mRNA more than one proteins are synthesized, more than one proteins are formed, then it is called as polycystonic mRNA. ताकि हमें कहमा polycystonic. देखो, if mRNA is making a single protein, यदि mRNA single protein तो बनाउछे monocystonic. mRNA यदि more than one protein formation करूछे तो ताके कहमा polycystonic. That is the difference. देखो, हमें जितला monocystonic देखुतला सनो काना रहतला गुटे start कोडन गुटे stop कोडन रहतला, but in our gen mRNA देखला they have multiple number of start codon and stop codon. Okay, this from this start codon to this stop codon गुटे protein. इस start codon नो ये stop codon भितर गुटे protein. इनु start हला इनु protein synthesis हला फिर गुटे protein तैयारी हला. Okay, तो इनो अमर काना हला. इनो अमर the polycystonic mRNA, the polycystonic mRNA have more than one start codon and stop codon. Start and stop codons. मनकर पाखे more than one start codon and stop codon रहला. That is the difference between the monocystonic and polycystonic mRNA. Okay, तो इना में काना देखला देखो polycystonic mRNA कहा के कहूछु if mRNA is making more than one protein, that is called as what? Polycystonic mRNA. And in the polycystonic mRNA there is numerous number of start codon and stop codon. Okay, from one start codon to another stop codon, that will make one protein. Another start codon to another stop codon, that will make another protein. So in this way, from a single mRNA, if there will be formation of multiple number of your proteins, then that is called as what? Polycystonic mRNA. And this is the characteristic features of prokaryotic cell. Ita kahar characteristic features hai? Prokaryotic cell mankar characteristic features hai. But monocystonic हमें mRNA जितले देखुछु, that is the characteristic features of eukaryotic cell. But polycystonic mRNA, it is the characteristics of your, for example, this is found in prokaryotic cell. This is seen in prokaryotes.
कहार नु देखबार के मिलसी प्रोकैरियोट्स मन करनु देखबार के मिलसी एटा बेला हमर काना दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए एबे हमें जाऊं कहार भीतर के एंटर करमा दैट इज योर rRNA द नेक्स्ट RNA दैट इज द rRNA ओके एबे हमें डिस्कशन करमा कहार बाबद रे rRNA बाबद रे डिस्कशन करमा सो व्हाट इज दैट rRNA वी नो दैट rRNA माने काना दैट इज द राइबोसोमल RNA राइट अगर डिस्कशन करितिला rRNA stands for ribosomal RNA why it is called as ribosomal RNA इधर के हमें कहां ले जो राइबोसोमल आरएनए कहू छो बिकॉज़ दिस इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम काना कहला फर्स्ट लेट मी राइट जे rRNA इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द राइबोसोम That's why that is called as ribosomal RNA. Ribosome रो क्या कंपोनेंट कहला स्ट्रक्चरल कंपोनेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट माने कना जे इट इज हेल्पिंग टू मेकिंग द राइबोसोम राइबोसोम रो स्ट्रक्चर तैयारी करबार लागि हेल्प कर सके दैट इज योर राइबोसोमल RNA राइट व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बिकॉज़ राइबोसोम बनावर लागि rRNA make the ribosome with proteins देखो काना कहला जे rRNA और प्रोटीन्स मिसी करी काना तयारी करसन राइबोसोम तयारी करसन गुटे में राइबोसोम सपोज दिस वन दैट इज योर राइबोसोम हला ओके गुटे राइबोसोम हमें जितले देखुछु तार दुईटा सब यूनिट थिसे एटा के गुटे क्वेश्चन स्मॉलर सब यूनिट गुटे के कहला स्मॉलर सब यूनिट एंड आगुटे के कहला लार्जर सब यूनिट ओके गुटे राइबोसोम हम जितले देखुछु गुटे स्मॉलर सब यूनिट रहला गुटे लार्जर सब यूनिट रहला एंड इफ यू सी दिस स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट देयर इज प्रेजेंस ऑफ rRNA there is presence of some RNA okay this is one RNA this is one RNA okay and rest जहाँ रहला there is presence of proteins देखो राइबोसोम हम जितले देखुछु there is presence of what there is presence of RNA this one that is called as rRNA okay RNA प्रेजेंट अछि तार संगे काना प्रेजेंट अछि तार संगे हमर प्रेजेंट अछि प्रोटीन्स माने प्रेजेंट अछि ओके तो हमें राइबोसोम हमें जितले देखमा राइबोसोम के काना कहि पारमा राइबोसोम that is only made up of two things ribosome that is the complex of RNA and protein okay ribosome that is the complex of RNA and protein RNA और protein रो complex से कहूछ हमें काम बोली के ribosome बोली के कहूछ and ribosome रे जन RNA अछि से तक ribosomal RNA कहूछ ribosome रे अछि बोली के ताके कहूछ हमें rRNA और ribosomal RNA बोली के कहूछ है ना तो rRNA एंड प्रोटीन रो गुड कॉम्प्लेक्स के कहला में काम बोली के राइबोसोम एंड अप्रोक्सीमेटली 40 to 60% ऑफ द टोटल राइबोसोम दैट इज कवर्ड बाय द rRNA जतले देखु छु दिस वन इटा भी हमर rRNA दिस वन दैट इज योर rRNA दिस वन इज योर rRNA तो राइबोसोम रो अप्रोक्सीमेटली 40 to 60% दैट इज कवर्ड बाय rRNA ओके एंड रेस्ट जहां रहला दैट इज योर प्रोटीन्स रहला ओके तो राइबोसोम रे rRNA एंड प्रोटीन अछि
सेति लगे राइबोसोम के गोटे ना दिया हिचे राइबोसोम के अदरवाइज कहै दिस इज आल्सो कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स दिस इज आल्सो कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स देखो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स राइबो माने काना राइबोन्यूक्लियो माने काना राइबोन्यूक्लियो रो माने हला राइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोन्यूक्लियो माने काना राइबोन्यूक्लिक एसिड माने काना आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड माने काना आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज योर आरएनए राइबोन्यूक्लियो वर्ड टा में यूज करला कहार लगे आरएनए रो लगे एंड सेना छै काना प्रोटीन आरएनए एंड प्रोटीन अछि बोली करी राइबोसोम के अदरवाइज काना कहै छै राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स बोली करी कहै छै तो हमर जेतले कहउतला जे इट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम दैट इज द rRNA is the structural component of the ribosome why it is the structural component of the ribosome because if you see the ribosome there is only two things is there only your rRNA and your proteins खाली RNA अच्छे and protein अच्छे and then RNA अच्छे ताके कहला में ribosomal RNA बोली करी कहला क्लियर ओके तापरे जाऊं आउ काना कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहला केन टाइप रो RNA काना थिसी डिस्कशन कर माता पर देखो हमें जेतले देखुतला RNA सबथुरु मोस्ट एबंडेंट RNA सब कहा के कंसीडर करथला दैट इज योर राइबोसोमल RNA जतकी भी RNA छन सबथुरु अधिक RNA केनटा थिसी दैट इज योर राइबोसोमल RNA प्रेजेंट थिसी है ना so this is the most abundant RNA rRNA is the most abundant RNA सबुतरो अधिका केन RNA अच्छे दैट इज द rRNA अच्छे मोस्ट abundant RNA सब एते हमें कंसीडर करू छ है ना and another things we have to remember entrance exam रे आसी जमर out of different type of RNA which RNA that is the most stable form of RNA सबुतरो most stable form that is your ribosomal RNA it is the most stable form of RNA it is the most stable form of RNA बहुत सारा डिफरेंट टाइप रो RNA अछि से भितरो मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ RNA हमें कहा के कहमा दैट इज योर ribosomal RNA के कहमा okay that is quite stable रहसी okay but other RNA that are more reactive but this RNA that is हतके reactive no है because that is the part of your ribosome रो भितरे रहू छै it is not floating inside the cytoplasm रे RNA माने free renewable पर they are the part of your ribosome that's why these are most stable form of RNA कहा के कोस most stable form of RNA that is your ribosomal RNA question SC you have to remember this okay one mark रा question आसी पारे okay just wait okay next time discussion करमा that is your different types of ribosome हमें देखमा हमें राइबोसोम जेतले देखुचुन दुईटा टाइप रो राइबोसोम अछि हमर पाखे गोटे हला 70S टाइप राइबोसोम and another one that is your 80S type ribosome गोटे 70S टाइप राइबोसोम अछि आ गोटे 80S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट अछि 70S and 80S रो भितरे डिफरेंस काना देखो जेतले राइबोसोम देखुछु ताके हमें दुईटा कैटेगरी डिवाइड कला 70S आ गोटेला 80S इचा करे 70 माने काना S माने काना 80 माने काना S माने काना जानबा देखो इचा करे S माने काना S होचे दैट इज द राइबोसोम और कैन से बी मॉलिक्यूल्स ना से कैन से बी सब्सटेंस ना ताके मापबार लगी ओके तार साइज डेंसिटी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेस करी ताके गोटे यूनिट द्वारा मपा जाय
से यूनिट के क्वेश्चन में काम लिखे दैट इज कॉल्ड सेडवर्क यूनिट, सेडवर्क यूनिट, और इता के कहा जैसे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रो माने काना देखो कैंसी भी मॉलिक्यूल सामान नेला कैंसी भी किछटा स्ट्रक्चर नेला ताके मैं काना कला देखो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रो माने काना भल से ठीक बुझी जाओ। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और सेडवर्क यूनिट बोली भी कहि पारमा बिकॉज़ दिस वाज फर्स्ट गिवन बाय सेडवर्क बोली गोटे बायोलॉजिस्ट ई कांसेप्टटा देथिले सेते लगी ताकर ना हिसाब से सेडवर्क यूनिट बोली भी कहआ जायसी। ओके राइबोसोम के हमें मेजरमेंट करबार लगे ताके मेजर करबार लगे ताके मापबार लगे जन गोटे यूनिट यूज करूछो केन यूनिट यूज करूछो दैट इज द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और सेडवर्क यूनिट बोली कहूछो। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट माने काना देखो बुझबार के ट्राई करना जते बेला हमें कैंसी भी स्ट्रक्चर के गोटे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन रे पका जाउछ क्या मशीन रे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन सपोज दिस वन दैट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन हला देखो हमें पाथोलैब जाइतमा समझते पाथोलैब जतले हम ब्लड टेस्ट करबार छै काना करबार छै हमें पाथोलैब के जदी जिमा सेन गोटे हमर एंता मशीन टे लागितसे ओके जदी तुमको अपॉर्चुनिटी मिलु छै यू कैन गो टू द एनी पाथोलैब नियरेस्ट कैंसी भी पाथोलैब के जीवो एंसन सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन केनटा बोली के पचराबो या फिर तुमर इंस्टीट्यूट रे भी अवेलेबल थिबा मोस्टली समस्तनकर कॉलेज रे अवेलेबल थिबा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन रे काना करा हेसी जे हमर सपोज धरिनियो हमें गोटे मिक्सचर नेला ओके इन हमें मिक्सचर नै छु डिफरेंट टाइप रो मॉलिक्यूल्स हमें इन सपोज नै छु डिफरेंट टाइप रो स्ट्रक्चर्स हमें ना ओके इटा गोटे टाइप रो स्ट्रक्चर ना एंड इटा गोटे टाइप रो सब्सटेंस ना दुईटा टाइप रो मानकर सब्सटेंस नै छु okay but we want to separate these two substance suppose ita substance a dela ita के ना substance a green टा के दला a और yellow के दला हम मन कर b दला इते के दला b but we want this two substance in separate way इमन को सेपरेशन करबार के चाहबा ओके इनो काना আছে मिक्सचर আছে ई मिक्सचर रो हमको काना करबार छे both have to separate them okay हमको काना करबार के पड़बा we have to perform centrifugation हमको इनो काना परफॉर्म करबार के पड़बा सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म करबार के पड़बा एंड सेंट्रीफ्यूगेशन रे काना करा जिबा देखो सेंट्रीफ्यूगेशन रे काना करा जैसे हमें एते के काना करला इथरे पके देला टोटल जतके भी मिक्सचर अछि मिक्सचर के हमें पके देला ओके एंड गोटे साइड रे जतकी भी हमें मिक्सचर ना आरो साइड रे सेम अमाउंट रो हमें न मिसे दमा वाटर सेम लेवल रे बैलेंस करबार लेके दुई साइड के नै गला हमें न वाटर दुईटा समान अछि जतले इतर स्विच ऑन कर दिया जिबा ई मशीन रो स्विच ऑन जतले कर दिया जिबा इनो लागि छै गोटे रोटेटर लागि छै ओके ई रोटेटर घुरबा रोटेटर जते बेले घुरबा ई टेस्ट माने भी का करबे दुई साइड रे माने भी का करबे घुरबे जते बेले सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन रे हमर काना करछे रोटेशन जते बेले हेबा सेन हमर काना हबा सेंटर रो मॉलिक्यूल्स मानकर ऊपर काना पड़बा गोटे फोर्स पड़बा सेंटर रो मॉलिक्यूल्स मानकर ऊपर काना पड़बा गोटे फोर्स पड़बा एंड से फोर्स के कहै हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ताके कहू हमें काम बोली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जेतले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़बा कहार ऊपर ए जन डिफरेंट सब्सटेंस भी जन लेचो डिफरेंट सब्सटेंस इमनकर ऊपर काना पड़बा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़बा एंड ड्यू टू दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमर काना हबटा स्टार्ट हबा ए जन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स समना सेटल डाउन हबटा स्टार्ट करबे सेटल डाउन माने काना तले बसी जिबाटा स्टार्ट कर तो हमर किछि टाइम घरे साला परे हमें देखला सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन रे काना हितबा देखा ओके किछि टाइम रोटेशन हला परे हमर इजन मॉलिक्यूल्स माने अछन
ये मॉलिक्यूल्स माने काना करले तले सेटल डाउन करी गले बट इनु काना देखबार के मिलना देखो इंपोर्टेंट थिंग्स इज हियर जमीन मिक्सचर नहीं थिला बट मिक्सचर रे सब मॉलिक्यूल्स जे जे जगह रे थिले फ्री रे बुलुथुले बट सेंट्रिफिकेशन कर देला परे काना हला इमान कर दुईटा लेयर क्रिएट हे गला तले बसी गला किए दैट इज योर मॉलिक्यूल बी एंड ऊपर बसी गला ए तले रह गला के बी एंड ऊपर रह गला के ए का हला जमर जतले सेंट्रिफ्यूगल फोर्स पड़ला सेंट्रिफ्यूगल फोर्स समस्त सब टाइप रो मॉलिक्यूल ऊपर समान सेंट्रिफ्यूगल फोर्स नहीं पड़बा एंड केते कहार ऊपर केते लेवल रो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स पड़बा कहार ऊपर डिपेंड करूछे दैट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल दैट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हां कि नहीं तो जहार ऊपर हमर जनी सब मॉलिक्यूल्स ऊपर डिफरेंट अमाउंट रो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स पड़ला तो इन हमर दुईटा टाइप रो मॉलिक्यूल्स थिला दुईटा टाइप रो सब्सटेंस जेहेतु थिला तो जेन हिसाबे मनकर ऊपर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स पड़ला तो से माने से हिसाबे काना करले दे आर नाउ सेटल डाउन एट द बॉटम ओके तो हमर नो किछि टाइम गला पर जेतले देखला जे किछिटा तले बसी गले किछिटा तार ऊपर बसी गला माने पहला के सेटल डाउन हला बी पहला सेटल डाउन हे गला ओके बट इता के अधिका टाइम लागला कहा के अधिका टाइम लागला ए के ओके ई भितरु के पहला सेटल डाउन हे गला पहला तले के बसी पड़ला दैट इज योर बी बसी पड़वा माने काना सेडिमेंट फास्ट सेडिमेंट माने काना बसी जीवाटा सेडिमेंट फास्ट ई पहला बसी गला ओके एंड ई पछा बसला सेडिमेंट लेटर तो इन नंबर how quickly a particular molecule is settled down or sediment when we perform the centrifugation that is called as sedimentation coefficient जेतेबेला हमें centrifugation करूछु okay how quickly a particular molecules that is settled down at the bottom that is called as what sedimentation coefficient कितने टाइम लागु छी we can say that not purely time कहि परमा जे केते वेलोसिटी लागु छी कहा के अधिका टाइम लागु छे कहा के कम टाइम लागु छे जहा के अधिका टाइम लागु छे से पछे बसु छे जहा के कम टाइम लागु छे से आगो बसी जाउ छे ओके नी तो इनो देना गला जे जेन माने ठीक हेवियर अछन जेन मानकर साइज ता ठीक लार्जर रहला से मानकर वेट अधिका रहला डेंसिटी अधिका रहला से माने पहला बसी जाउ छन ओके नी एंड किछिटा मॉलिक्यूल जेन माने ठीक लाइटर वेट रहले से मानकर साइज स्मॉलर रहला डेंसिटी कम रहला से माने पछे बसु छन इमेजिन करो सपोज हमें काना करछु फोर्स पकोछु तो हमर बड़ मॉलिक्यूल्स जदी अच्छे बड़ साइज रो मॉलिक्यूल अच्छे सेते के हमको काना लागु छे इनके फोर्स पकावार पड़ु छे बट जल्दी से काना करि जाउ छे सेटल डाउन करि जाउ छे एंड ई धीरे धीरे सेटल डाउन करछे बिकॉज़ दैट इज स्मॉलर साइज रो मॉलिक्यूल ओके तो ड्यू टू सेंट्रिफ्यूगल फोर्स रो लागी देन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थिले दे आर सेटल डाउन एट अ डिफरेंट रेट कितने रेट रे दे आर सेटलिंग डाउन ओके और हाउ फास्टर दे आर सेटल डाउन एट द बॉटम ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन और ड्यूरिंग सेंट्रिफ्यूगेशन ताके कहू हमें काम रे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ओके सो व्हाट इज दैट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रो माने हाउ क्विकली और at which rate a particular molecule is sediment at the bottom during centrifugation that is called as sedimentation coefficient ओके केते रेड रे जाइकर से बस जाउ तो हमर काना कला राइबोसोम नेला दुईटा टाइप रो राइबोसोम देखबार के मिलला सपोज दिस वन दैट इज योर राइबोसोम इटा हला सपोज माने को दिस वन दैट इज योर 70s टाइप राइबोसोम एंड दिस वन दैट इज योर 80s टाइप राइबोसोम ओके
गोटे 70s टाइप राइबोसोम और गोटे 80s टाइप राइबोसोम दिस वन दैट इज योर 80s टाइप बी टा जेंटा थिला हमर काने दैट इज योर 80s टाइप एंड ए टा जेंटा थिला दैट इज योर 70s टाइप ओके इनो काने जना पडुछे केनटा हेवियर दैट इज योर 80s टाइप राइबोसोम दैट इज द हेवियर राइबोसोम heavy size ribosome ठीक है larger size ribosome but 70s type ribosome that is smaller size ribosome that's why that is taking more time to sediment पहला अधिका टाइम कहा के लागला हमर ए के अधिका टाइम लागला से से पछा बसुचे राइट बट बी के हमको जे टाइम देखमा बी के कम टाइम लागला से पहला बसी जाई छे पहला बसी छे हमने कम टाइम लागि छे ओके टाइम तो हमें कहि नै पारो फास्टर जे देखमा अधिका फास्ट रे के जाय करी बसी गेला that is your 80s type ribosome इज अगर s रो वैल्यू दिया है 10 to the power minus 13 second ओके s के में we can calculate this in second but इज अगर सेकंड माने इज अगर पूरा प्योरली जो देखमा डायरेक्टली दिस इज नॉट द टाइम इट होचे रेट वन टाइप रो वेलोसिटी कहि परमा कि केते स्पीड रे बसु छे इता के 80s टाइप राइबोसोम 80s type ribosome that took 80s time or 80s speed रे जाइकरी से बसुची इन इतके केते टाइम लागु छे 70s 70 into 10 to the power minus 13 second कहि परमा एंड 80s रे माने काना 80 into 10 to the power minus 13 second बोलिकरी कहि परमा ओके बिकॉज़ 1s रो वैल्यू दिया है दैट इज 10 to the power minus 13 second 80s माने काना जे 18 to 10 to the minus 13 second स्पीड रे से जाइकरी बसुची एतकी स्पीड रे जाइकरी से सेटल डाउन करूची एनी ई एतकी स्पीड रे जाइकरी काना करूचे सेटल डाउन करूचे तो के अधिका स्पीड रे सेटल डाउन करूचे 80s टाइप राइबोसोम के कम स्पीड रे सेटल डाउन करूचे 70s टाइप राइबोसोम है ना तो 70s टाइप राइबोसोम के जो स्पीड देखमा स्लो अछि एंड इतर स्पीड देखमा फास्टर अछि तो फास्टर किए बसला 80s टाइप राइबोसोम ओके इता जदी देखमा इतर सेडिमेंट जेतेले देखमा सेडिमेंट दैट फास्टर एंड इतर सेडिमेंटेशन जेतेले देखमा दैट सेडिमेंट स्लोअर स्लो सेडिमेंट हला बट ये फास्टर सेडिमेंट हला ओके तो सेडिमेंट किए फास्टर हबा और किए स्लो हबा कहार पर डिपेंड करछे दैट डिपेंड अपॉन द साइज ओके तो इता जदी हम देखमा साइज तार शेप एज वेल एज डेंसिटी तार सब ऊपर डिपेंड करूछे तो लार्जर साइज रो राइबोसोम अच्छे गोटे स्मॉलर साइज रो राइबोसोम अच्छे ओके इतर साइज टिके काना अच्छे छोट अच्छे एंड इतर साइज टिके काना अच्छे लार्जर अच्छे सो दैट इट इज टेकिंग very less time to sediment but it is taking more time to sediment okay more time लागला कहा के 70 s स्पीड रे जाउछ सपोज धरि ना हम बाइक रे जाउछ जने बाइक रे 30 किलोमीटर पर आवर रे जाउछ और जने 60 किलोमीटर पर आवर जाउछ के फास्टर जाउछ 60 ओके जने 60 रे जाउछ जने 30 रे जाउछ के फास्टर जाउछ 60 वाला फास्टर जाउछ जस्ट लाइक दैट इज अगर गोटे 80 रे जाउछ आ गोटे 70 एस रे जाउछ के फास्टर गला दिस वन दैट इज फास्टर मोबी कला तो राइबोसोम के सही हिसाब में हमें डिवाइड कला और कैसे भी मॉलिक्यूल के हमें डिवाइड करी पारमा ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन हाउ फास्टर और हाउ क्विकली ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज सेडिमेंट जतकी क्विकली सेडिमेंट करछ तार सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट सेतकी अधिक हवा ओके इनो के क्विकली गला दैट इज योर 80s टाइप राइबोसोम पहला बसला केते स्पीड रे बसला 80 into 10 to the minus 13 सेकंड रे बसला बड़ी केते स्पीड रे बसला 70 into 10 to the minus 13 सेकंड रे बसला माने स्लो के गला दिस वन इज स्लो एंड दिस वन इज फास्टर ओके एंड जे फास्टर जे करी बसुछ मोस्टली साइज जे देखमा दैट इज योर लार्जर साइज एंड दिस वन दैट इज योर स्मॉलर साइज तो हमर 70s टाइप और 80s टाइप राइबोसोम रो कंपैरिजन जते बेले करूछु 70s टाइप राइबोसोम and 80s type ribosome comparison jodi karma this one that is smaller size ribosome this one is your smaller size ribosome and this one is your larger size ribosome okay and ribosome means ribosome रे rRNA अछि and protein अछि okay नहीं तो इनो भी हमें देखमा जते बेले इतर पखे काना अच्छे
they are having the गोटे स्मॉलर सबयूनिट अच्छे गोटे लार्जर सबयूनिट अच्छे ओके दिस वन दैट इज द स्मॉलर सबयूनिट and this one that is your larger subunit okay here also गोटे larger subunit और गोटे smaller subunit अच्छे this one that is your larger sorry and this one is your larger subunit ओके तो इन नंबर काना अच्छे प्रोटीन अच्छे एंड योर आरएनए अच्छे ना आरएनए प्रोटीन अच्छे देखो काना काना राइबोसोमल आरएनए किन किन टाइप रो राइबोसोमल आरएनए अच्छे दैट वी हैव टू डिस्कस हियर ओके एबे देखमा अमर स्मॉलर सबयूनिट और लार्जर सबयूनिट दुईटा जनरली दे आर सेपरेट कंडीशन रहतसन जनरली माने सेपरेट थसन बट मन को जदी जॉइन करामा तो मन को जॉइनिंग करले देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम आयन ओके फॉर द जॉइनिंग ऑफ द लार्जर एंड स्मॉलर सबयूनिट देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ योर मैग्नीशियम आयन क्वेश्चन इज सी the larger and smaller subunits of the ribosome that are joined by which ion that is your magnesium ion एबे देखमा हमर larger and smaller subunit रे हमें जते बेले देखुछु इनो काना अच्छे आरएनए अच्छे इनो जन आरएनए अच्छे ई आरएनए के कहूछु हमें काम लिखरी दिस वन that is your इते के कहला में दैट इज योर 16s rRNA इडेला केन आरएनए 16s rRNA 16s माने काना 16 into 10 to the minus 13 सेकंड स्पीड रे जाई कर सेडिमेंट करबा जदी हमें ई आरएनए के नेकरी सेंट्रीफ्यूगेशन कराला दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड 16s rRNA s रो माने काना एंड 16 माने काना ई जगह में तुमको टिके आगरो कहली 70s 80s भीतर डिफरेंस काना हैला तारा गुरु जस्ट वेट हमर जने स्मॉलर सबयूनिट लार्जर सबयूनिट अछि टिके आगरो कहली जे दे आर सेपरेट कंडीशन रे थिसन यदि सेपरेटली तके में नमा स्मॉलर सबयूनिट के और सेंट्रीफ्यूगेशन करामा इतके लक्ष्य 30s केते स्पीड रे जेकर सेडिमेंट करबा 30s बट ई इतके लक्ष्य केते s इतके लक्ष्य 50s ओके इतके 30s लक्ष्य इतके 50s लक्ष्य बट दुईटा के मिसै कर सेंट्रीफ्यूगेशन कराले दुईटा के मिसै कर सेंट्रीफ्यूगेशन कराले केते एस लागु छे 70s ओके दुईटा के मिसै करी जतले मैग्नीशियम आयन रो प्रेजेंस रे दुईटा जॉइंट अछन से टाइम रे सतके सेंट्रीफ्यूगेशन करूछु सतके केते स्पीड रे जेकर सेडिमेंट करूछु 70s स्पीड रे जेकर सेडिमेंट करूछु बट दुईटा के सेपरेट कर देला इतके 30s लागु छे इतके 50s लागु छे कंफ्यूज ना हेबो इन 50s और 30s छे 50s 30s के मिसाले तो 80s हबार कथा नाही डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के टिके घरु कहलु डिफरेंट मॉलिक्यूल ओके के हिसाबे अछि तार साइज डेंसिटी समस्त को ऊपर डिपेंड करूछि इधर के सेपरेट नहीं करी सेंट्रीफ्यूगेशन करा गला 30s लागला इधर के सेपरेट नहीं करी सेंट्रीफ्यूगेशन करा गला 50s लागला बट जॉइन करी करी जतले निया गला इधर के लागला 70s दैट्स दैट इज 70s ओके दुईटा के मिसै करी ना बाहर करा हो जेनसी भी मॉलिक्यूल नला सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन रे पकला हाउ फास्टर दैट इज सेटलिंग डाउन तार ऊपर डिपेंड करछन से टाइमिंग के कंसीडर करी करी हमें तके सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट तार बाहर करू छ ओके तो इनो स्मॉलर सबयूनिट दैट इज 30s स्मॉलर सबयूनिट रे काना होचे गोटे 16s rRNA होचे ओके एंड तार संगे प्रोटीन्स माने होचे अप्रोक्सीमेटली 21 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स होचे इनो जन प्रोटीन माने होचे ओके इन प्रोटीन अछि केतेटा टाइप रो प्रोटीन्स अछि 21 प्रोटीन्स ओके सेंता हमें जदी देखमा 80s टाइप राइबोसोम
ATS type ribosome रो तर smaller subunit रो sedimentation coefficient हला 40s and larger subunit रो sedimentation coefficient हला 60s दुटा के join करिथिले they are taking 80s time but this one 70s right but separate 40s और 60s दुटा के मिसाले तो 100s हबार कथा ना दुटा के join करि करि नले that is taking 80s time okay तो एबे हमें देखमा इनो भी काना अच्छे राइबोसोमल आरएनए अच्छे बट इनोजन राइबोसोमल आरएनए थिला दैट इज 16s थिला बट इनोजन राइबोसोमल आरएनए अच्छे दैट इज 18s इनोजन राइबोसोमल आरएनए थिला दैट इज योर 18s आरएनए ओके एंड जदि हमें देखमा ई 16s RNA जो देखमा RNA that is made up of nucleotides RNA that is made up of what nucleotides तो इतर नो केतटा न्यूक्लियोटाइड्स अछि 16s RNA रे नो जे न्यूक्लियोटाइड्स माने राइबो न्यूक्लियोटाइड्स माने जॉइन हितिबा ना तो इनो केतटा राइबो न्यूक्लियोटाइड्स अछि इने देखमा 1500 न्यूक्लियोटाइड्स अछि 1500 of nucleotides they are joining to make the RNA Kin rRNA that is your 16s rRNA but 18s rRNA jitale dekhma here there is presence of 2000 nucleotides 2000 nucleotides 2000 ta nucleotides present ache amar ATS type ribosome re okay tapre ame galla next galla ame ken that is your larger subunit dekho na larger subunit re bhi kana ache RNA अच्छे तो इनो जन RNA अच्छे this one okay it हला 23s rRNA okay 23s rRNA इनो अच्छे and इनो भी कुछ larger rRNA अच्छे that is 28s rRNA अच्छे okay and this 23s rRNA that is having 3000 nucleotides but here इतर पाखे होचे 5000 nucleotides okay इतर पाखे 3000 टा nucleotides and इतर पाखे केतरा nucleotides that is your 5000 nucleotides present अछि okay just wait a second okay तापरे हमें देखमा जदी in case of pure amor 50s larger subunit 70s type ribosome रे जे देखमा इनो आ गुटे RNA present थिसे that is the 5s rRNA okay इनो आ गुटे RNA अछि तके कहला 5s rRNA okay any 5s rRNA रे जे देखमा केतेटा न्यूक्लियोटाइड्स अछि there is presence of only 120 nucleotides 120 nucleotides okay and इनो भी हमर अछि गुटे 5s rRNA इनो भी अच्छा हमर काना 5s rRNA okay this is also 120 nucleotides okay तो इटा तुमको मन रखबार अछि जे which RNA that is the common RNA between the your 70s type ribosome 80s type ribosome there common रहला 5s RNA दुही न प्रेजेंट अछि दुही larger subunit रे but इतर larger subunit रे another RNA present is C that is 5.8s 5.8s rRNA 5.8s rRNA माने काना जे that will take 5.8s timing during the time of centrifugation and 5.8s RNA रे जो देखमा there is presence of how many nucleotides there is presence of 180 nucleotides okay
एंड इनो हमर प्रोटीन थिला ना इनो प्रोटीन अच्छे इनो जन प्रोटीन्स अच्छे इनो थिला हमर 21 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स एंड इनो अच्छे हमर 33 प्रोटीन्स ओके एंड इनो हमर भी प्रोटीन अच्छे एंड इनो किन प्रोटीन अच्छे इनो there is presence of 30 different types of proteins the larger subunit re okay and here also there is presence of protein and you know ketata type of proteins hoche 49 different kinds of proteins are there okay you know hoche 49 proteins okay so this is your राइबोसोम 70s टाइप राइबोसोम 80s टाइप राइबोसोम 70s टाइप राइबोसोम हमें जितले देखुछु 70s टाइप राइबोसोम रे दुईटा सब यूनिट रहला गुटे हला 30s स्मॉलर सब यूनिट एंड 50s लार्जर सब यूनिट हमर इना देखला जे दैट इज योर 40s स्मॉलर सब यूनिट 60s लार्जर सब यूनिट अनदर डिफरेंस जे हमर 30s स्मॉलर सब यूनिट रे देयर इज प्रेजेंस ऑफ 16s rRNA इनो प्रेजेंट होचे 18s rRNA इनो प्रेजेंट होचे हमर लार्जर सब यूनिट जेतेले देखला देयर इज प्रेजेंस ऑफ 23s rRNA इनो प्रेजेंस होचे 28s rRNA इनो प्रेजेंट होचे हमर 5s rRNA इनो भी प्रेजेंट होचे हमर 5s rRNA बट इनो एक्स्ट्रा रहला 5.8s rRNA देन इधर स्मॉलर सब यूनिट 21 प्रोटीन्स इनो 33 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन इनो रहला हमर काना दैट इज योर 30 proteins but here there is your 49 proteins that is the difference between your 70s type ribosome and 80s type ribosome and these are the different kinds of ribosomal RNA or rRNA which are present in the ribosome तो केतेटा टाइप रो rRNA हमें देखबार के पाइला राइबोसोम रे 70s टाइप राइबोसोम रे देखबार के पाइला 1 2 3 1 2 and 3 and 80s टाइप राइबोसोम रे देखबार के पहला this one 1 2 3 4 चारटा देखबार के पहला ओके तो हमर 70s टाइप राइबोसोम केनु देखबार के मिलसी 70s टाइप राइबोसोम फर्स्ट ही देखबार के मिलसी दैट इज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल okay that is found in the cytoplasm of prokaryotic cell okay and how can देखबार के मिलसी that is in the mitochondria and chloroplast how can देखबार के मिलसी mitochondria and chloroplast रे देखबार के मिलसी okay mitochondria जतले suppose this one that is your mitochondria है ना माइटोकॉन्ड्रिया रो तार जन मैट्रिक्स रहला तार जन सेमी फ्लूइड रीजन रहला ई जगह रे जे देखमा इनो भी हमर राइबोसोम देखबार के मिलस ओके एंड जदी क्लोरोप्लास्ट हला सपोज दिस वन इटा मन कर क्लोरोप्लास्ट हला ओके इनो भी हमर काना छै राइबोसोम छै बट केन टाइप रो राइबोसोम दैट इज 70s टाइप राइबोसोम ओके and 80s type ribosome केनो देखबार के मिलसी this is only found देखो गुटे जिनिस मन रखि तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट केनो देखबार के मिलसी that is in your eukaryotic cell माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कहां न देखबार के मिलसी प्रोकैरियोटिक सेल रे तो नहीं थे यूकैरियोटिक सेल रे थीसी तो 70s टाइप राइबोसोम पहला साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल रो साइटोप्लाज्म रे देखबार के मिलसी तार संगे जदि यूकैरियोटिक सेल देखमा यूकैरियोटिक सेल रो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट रे देखबार के मिलसी सेंता 80s टाइप राइबोसोम that is freely found in the cytoplasm of eukaryotic cell cytoplasm of eukaryotic cell eukaryotic cell रो cytoplasm रे only देखबार के मिलसी 80s टाइप राइबोसोम this is totally absent in case of your prokaryotic cell totally नहीं ना but 80s type ribosome that is present in both prokaryotic and eukaryotic cell prokaryotic cell रो cytoplasm रे 70s eukaryotic cell रो cytoplasm रे 80s and eukaryotic cell रो chloroplast और mitochondria रे 70s type ribosome देखबार के मिलस राइट एडा गला हमर काना दैट इज योर राइबोसोमल आरएनए बाबत रे हम डिस्कशन कला ओके तो नेक्स्ट क्लास रे हम डिस्कशन करमा दैट इज ऑल अबाउट योर टीआरएनए लास्ट आरएनए डिस्कशन करमा नेक्स्ट क्लास रे ओके thank you if any doubt you can write to us our chat box is open for all of you and for the handwritten notes you all have to join our
nucleotides application जेन माने nucleotide application download नुहे करताली you all are requested to download our nucleotide application and enjoy all the lectures as well as your handwritten notes written by me. Thank you.